लास्ट टॉपिक क्या कहता है फोरकास्टिंग में? Karan, I didn't attend that last. निशांत है. Nishant, sorry. Yeah, I didn't attend last week class, so maybe Isha knows. Anyway, yeah, Isha. I also What was didn't the attend. last? Sorry, sir, I don't know. Actually, I didn't attend both of the sessions. कोई बात नहीं. So then I think मुझे याद है, I think we've discussed this accumulated losses, and we'll start with this expenses. This is what I could recollect. If anybody has a different view, otherwise I will start with this non-operating income. आशीष, अमित, अगर आपने किसी ने अटेंड किया हो लास्ट क्लास, एनी आइडिया कहाँ तक किया था हमने? नहीं सर, लास्ट क्लास अटैच नहीं किया था. ठीक है. So start with non-operating income. So yeah. So what do you mean by non-operating income and expenses? So your non-operating income is that income which is not from your core operations. Similarly, non-operating जो expense होते हैं, those expenses incurred on non-core activities. What does that mean? So for example, if you're into manufacturing of shirts, and let's assume if you're getting some income from FD interest. Okay. This is your non-operating income. Because your core operation is to manufacture shirts, sell the shirts, and make profit out of those. But let's assume if you have some surplus cash and you've invested in the bank in FD, and you're getting some interest from the FD, which is your income, but this is not your core income, and this is not the income that you're making from your core operation. Hence, such type of an income falls into this category of non-operating income. Similarly, if you're into the manufacturing of the shirts, and let's assume if you're buying raw material, okay, now this is your operating expense. But let's assume if there is some litigation or a legal expense or some theft or some fire, because of which you are incurring some legal expenses. And these legal expenses are your non-operating expense, because you're not into the legal business. When I say legal business, you're not into the business of filing cases for your clients. Correct? You're into manufacturing of shirts. So if there's a litigation or a legal proceeding and you have to incur some expenses, that becomes a part of your non-operating expense. So any question on what is non-operating expense and non-operating income before we move further? Okay. Now, the question is, when we are doing forecasting, do we need to
forecast these non-operating income and non-operating expenses or not. Okay. And one of the example is, so suppose income from associates. So income from associates क्या होते हैं वो पे discuss करते हैं. So suppose if you are a company A and you have invested and you hold 20% stake in company B. Okay. So in this case, B is called as A's associate. Okay. अगर more than 50% होता है, अगर more than 50% stake होता है, then this is called as subsidiary. Otherwise, it's called as associate. In our example, because the company A holds 20% stake in company B, so B is called as associate. Any question on this? No, sir. Now, so if company B makes a profit for the year, assume the profit is 100 rupees. 20% of this profit belong to A. Any doubt on this point? Because A holds 20% stake in company B, and if company B makes a profit of 100 rupees, then because I am 20%, I means the company A is 20% owner, whose profit का 20% is what it belongs to me. Yes, sir. So if you are preparing forecasted P&L for company A, now question is, should you add this 20% of 100? That is the question. The answer is yes. But for this, you first need to forecast P&L for company B as well. देख लीजिए यहाँ तक कुछ डाउट हो तो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है. जो रेट टेक्स्ट में है वो देखिए.
And you get out. No, Nishan. So this is tedious task because you wanted to forecast the P&L for company A, but because the company A has an investment in company B, and because you want to add this 20% profit in company in P&L for A, you stop forecasting A, then you start forecasting company B. Now the question is, should you do this or not? Should you do this or not? This is the question. Okay, which this slide is trying to explain you through flow chart. So the first question that we need to discuss is and assess, is this associate significant? Which means अगर उस associate का last year का profit अगर हम देखें, उस last year का profit का 20%, because our investment is 20%, less than 20% comes out with 20 rupees. Now, is this 20 rupees big enough? Let's assume if the total profit of the company itself is 10 rupees and 20 rupees is coming from the associate, which makes it 30. It's a big number, correct? Because then now it's become significant. But let's assume the total profit of the company include the 10,000 crore, or let's assume 10,000, let's remove crores, 10,000 rupees, and usme 200 rupees, so 20 rupees is we're looking at the income from associate, then it's not a significant number. Even if we ignore that number, that's not going to change too much from significantly from an analysis perspective. Right? That's the first question that we need to assess: is this significant or not? So if the answer comes out to be no, then you follow an approximation method. What do you mean by approximation method? Which means your income from associates is computed basis your investment amount into rate of return. Now, what does that mean? So suppose you've invested 100 rupees in company B, and historically the ROE, which is return on equity from that company, is, let's assume, 12%. So 12% into 100 rupees, because you invested 100 rupees, is what you're expecting on an average. So that is the number that I will add to my P&L. Any question, doubt till this point? Okay. Now, suppose this, we come back to the original question, and let's say, suppose if this amount turns out to be significant, yes, there's a significant value. So we come towards the left side of this, and now which means it's significant. So we should forecast the P&L for company B. But for forecasting P&L of company B, then we again get the next question: do we have information? Are there information available for us to forecast? If the answer comes out to be that no, you again go back to the same approximation method. But if the answer comes out to be yes, there's a company's information is available through which you can forecast, then you need to forecast. And then forecast करके जो P&L आएगा, उसका 20% is what you will take to A's P&L. Okay, so we'll give 2 minutes. एक बार just इस flow chart को देख लो, just try and absorb this, and let me know in case if you have any question or queries on this. ये जनरली M&A में या सब्सिडरी इन्वेस्टमेंट, एसोसिएट इन्वेस्टमेंट, वहां पे यूज होता है.
Any question on this flowchart? No, sir. Okay. Now, ये आप लोगों ने किया होगा जब कैश फ्लो स्टेटमेंट सेशंस करे होंगे आपने, आई थिंक way back KPMG to close session. So if you recollect, कैश फ्लो में तीन कैटेगरीज ऑफ सेगमेंट्स होते हैं: कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एंड कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग. तो ये सेम चीज है. जो आपकी इनकम ऑपरेशन से आती है उसको कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस बोलते हैं. जो आपके कैश फ्लो इन्वेस्टमेंट से आते हैं, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, if you invest some money into FD and you make some return out of that FD, which is your interest, now that is not your operations income, that is your investments income. And third is your financing. So let's assume if you have given a loan to someone else, and you're charging interest from that borrower on that loan. When you are charging an interest, that becomes your income or receipts. Okay, but that is not coming from your investment. That's not coming from your core operations. It's your financing business which has given you those funds. Any questions on this? And then you have examples of these, जैसे investments का है. So we discuss investments के example क्या हो सकते हैं: interest on your investments, dividends on your investments. आपने कोई asset को बेचा, उससे कोई profit आया. So all these are your income from investing category. Income from operations के examples क्या होंगे? आपने revenue, let's say in manufacturing of shirts, आपने shirts manufacture करके sale करके जो profit कमाया, that's your operating income. फाइनेंसिंग, आपने किसी को लोन दिया, उससे कुछ इंटरेस्ट या इनकम आ रही है, दैट इज योर इनकम फ्रॉम फाइनेंसिंग. एनी क्वेश्चन ऑन दिस स्लाइड? No, sir. Okay. Now, apart from investment in associates, we also make some other investments for corporates. What are those investments? Those investment could be your current account, your bank में आपका current account, मतलब corporate generally operate through current account, not through savings account. So उस account में भी कुछ balance होते हैं. Similarly, आपने कहीं पे FD करके रखा है, तो आपके जो भी short term cash equivalent investments होते हैं, वो सबका investments multiply with the rate of return. For example, आपने FD करके रखा है, तो अगर आपकी 3 FDs हैं, तीनों FD का total into rate of return of an FD will give you कि next year company को इस investment से कितना income generate होगा. And of course, that income will go to this category of investments. It will go into the category of investments, but still it will flow to P&L. इसलिए हमारे को forecasted P&L बनाने में ये हम use करेंगे. Is this clear? Income from investment income. Now, apart from this, there are certain extraordinary items in the P&L. So let's understand what is extraordinary items. For example, the extraordinary item जैसे कि for example, if there's a fire, now उस फायर की वजह से आपको कुछ रिपेयर्स कराना पड़ा,
in your go down or in your factory. Now, this is not a regular expense that you will incur, and this is not something will happen usually we're part of the business. Similarly, if there's an earthquake because of which कुछ building में damage होगा, वो damage आपको repair कराना पड़ता है. So these are called as extraordinary items. Now, some of the parameters to classify whether it's an ordinary or an extraordinary item is this: whether that activity or that expense is unusual or not, is that recurring or not, बहुत infrequent होता है या recurring regularly होता है, and is this material enough or not. If you find any of these parameters जिस पे वो pass नहीं करता, then such expenses or such items are called as extraordinary items. And these extraordinary items are generally outside the control of the management. For example, theft हो गया, fire है, COVID है, ये सब ऐसे events होते हैं which is not under management control. When I say management, what I mean is the management of the company जिसके लिए आप काम कर रहे हो या जिसके लिए आप forecasting कर रहे हो. So these items fall under extraordinary items, and when you're forecasting, you don't want to waste your time in trying to forecast these extraordinary items because you don't know. For example, if I'm forecasting anything, if I'm doing forecasting from any of the client, will I try and forecast the next COVID or next pandemic kab hoga? Because one of the theories is this repeats itself in next 20 years, in every 50 years or 40 years, whatever is the theory. Now, does that mean if I try and forecast some P&L for some companies, okay, next 50 years, next 100 years, a pandemic दोबारा आएगा and stuff like this? No, we don't do that because these are all extraordinary items. They are beyond somebody's control, and you will not try and waste time and energy and resources to try and forecast these extraordinary items. And that's the reason this slide is important. That if you look at some expenses in your P&L which qualifies to be an extraordinary items, you knock those off and try and not include that in your forecasting. Any questions? Okay, in case no questions on this, so so same जो मैंने आपको बताया, अगर extraordinary item है उसको कोई पैटर्न नहीं है. हिस्टोरिकली आप जब ट्रेंड देख रहे हैं लास्ट 4 years 5 years आप पैटर्न देख रहे हैं, so you can't see any pattern. For example, जैसे pandemic का मैंने आपको example दिया. If I'm doing forecasting for the company, if I look at last 5 years or 10 years operations of a particular business, I will not see this pandemic, correct? So if there is no pattern, it qualifies for an extraordinary item. And when इसको assume करूंगा कि अगले साल नहीं होगा या अगले 2 साल में नहीं होगा, and I will move on. I will not try and forecast into the pandemic scenario. But if there's a pattern, again I will not try and waste time in forecasting that. But I will use historical numbers and उसका जो average आएगा उसको मैं consider करूंगा अपने forecasting. Any question on this slide? Nishant, can you please repeat that? This slide or the previous slide? This slide. You clear with this slide? Yes. Which is defining how do you decide if the item is extraordinary or not. Yes, I'm clear with this. Now, so this is this parameter, so slide 28 है, जो अभी screen पे है. We are able to qualify whether it's an extra. We are able to assess whether this item or expense is extraordinary or not. Now, the question is, once you're able to assess, how do I use that in forecasting? So, if it's an extraordinary item, you have made an assessment. Yes, it's an extraordinary. Now, the next question that you need to ask: is there a pattern for this or not? Okay. For example, let's assume मैं एक इंडियन क्लाइंट के लिए फोरकास्टिंग कर रहा हूँ. इंडियन क्लाइंट के मैंने लास्ट ईयर के P&L में देखा
कि कुछ earthquake की वजह से कुछ expenses आए थे, डैमेज हुए थे और उसके रिपेयर कराए, तो वो उसके पीएनएल में एक्सपेंसेस में दिख रहा है. अर्थक्वेक की वजह से जो डैमेज हुआ उसके एक्सपेंसेस का रिपेयर दिख रहा है पीएनएल में. Now, is that extraordinary? The answer is yes. That's extraordinary. Now, can I see the pattern in the last 5 years? If I look at the last 5 years P&L, वहां पे कहीं भी earthquake के कोई ऐसे expenses नहीं होंगे. ठीक है? So which means there is no pattern. So then we get to the answer to is no. Then what I will do? So if there is no pattern, so what does this mean? मैं जब next year के लिए forecasting करूंगा, I will assume that there is no earthquake and hence there is no expenses related to damage on account of earthquake. This is the first part. Left side, or sorry, right side, which is no. You clear it? Okay. Yes. Now let's assume, I will give another example. So when we do this forecasting for Japanese clients, for the companies of the corporate space out of Japan, especially there are certain zones in Japan जो बहुत recurring earthquakes आते हैं because of the geographical positions of those centers, जिसको epicenters बोलते हैं, but without getting into too much of technicality of these earthquake, but there are certain segments जहाँ बहुत recurring earthquake आते हैं. तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे उन buildings में on an average every year or on a recurring basis एक maintenance होता है to ensure कि जो earthquake regularly आ रहे हैं उससे building को damage significant नहीं हो. Now, if I will look at the P&L for those type segment of the clients, there would be an historical pattern into the P&L जिससे मुझे पता लगेगा कि हाँ earthquake expenses, though it's an extraordinary item, it's not under control of a human being, but फिर भी वो recurring है और एक pattern मुझे मिल जाएगा. Because I can see those as pattern, what I will do, मैं जो last 5 साल की average या 3 साल की average देखूंगा कि on an average हर साल let's assume $100 का खर्चा आ जाता है, तो मैं उस $100 को next year के लिए use कर लूंगा अपनी forecasting. That is this left side of yes. Is that clear? Okay. Okay. Yes. Yes. It's clear now. Thank you. Okay, welcome. So, anybody else, any other question on this before we move further? Hello. क्या कांचा? Sir, Go ahead. actually, I had this question that we were asked to get some companies for ourselves where you will help us do the modeling for the same through guidance. So, what all things like there's a need to that we have to look into for designing the company? करते हैं discuss. So ये मैं थोड़ा topic खत्म कराऊं, then towards the end I will talk about this. Also, today we'll also discuss in terms of you as a batch क्या case आप class में modeling करते हैं. So give me some time, give me an hour or so. एक बार ये topic पहले थोड़ा सा खत्म करते हैं कांचा, then let's take this again. ठीक है? Okay, sir. Anything else on this जो भी हम कर रहे हैं? ठीक है? So moving to next slide. Forex impact. What is Forex? So Forex is foreign exchange. So when you say Forex, this represents foreign exchange. Now first, let me give you an example. How does this impact? Foreign exchange means exchange rate, which means conversion of one currency to another currency. For example, if I say 1 USD is equal to 70 INR, INR is Indian rupees and USD is US dollar. So 1 USD is equal to 70 INR means if you give 70 rupees to a bank can give you $1 or vice versa. If you give $1 to the bank will give you 70 INR. That's what it means, exchange rate. At what rate you can convert one currency to another currency. Okay, now
So for example, let's assume I'm an Indian company और मैंने कुछ exports करे, और मेरे domestic sales है. So मैंने जो exports करे हैं वो $100 के करें, क्योंकि exports डॉलर में होंगे, और मेरे जो domestic sales है let's assume वो 1000 INR है या INR में है, और जो मेरे exports है वो USD में. अब मैं इंडियन कंपनी हूं, जो मेरा P&L होगा या मेरी बैलेंस शीट होगी वो तो INR में होगी, which means I need to convert this USD sale into INR for adding to P&L. Yes or no? Yes. Yes. Now let's assume we are in 2019, ठीक है, और 2019 में एक्सचेंज रेट ये चल रहा है जो ये मैंने ऑरेंज हाईलाइट किया, ठीक है. सो दिस $100 मीन्स कितना सेल हो गया? $100, $1.70 INR, so this becomes 100 into 70, 7,000. तो मेरी टोटल सेल्स कितनी हो गई? This plus this. This is my total sales. हाँ जी, I will pause here. कुछ डाउट है कैलकुलेशन में, यहाँ तक किसी को कोई क्वेरी है तो पूछिए. ठीक है. Now suppose टू 2020 आ जाता है, एंड 2020 में भी सब कुछ सेम है. तो कंपनी ने अगेन 2020 में एक्सपोर्ट किए $100 के, और डोमेस्टिक सेल्स 1000 रुपीज की है, विच इज इन INR. ठीक है. बट 2020 में एक्सचेंज रेट हैज चेंज टू, लेट्स अज्यूम, एक्सचेंज रेट ऊपर भी जा सकता है नीचे भी जा सकता है, लेट्स अज्यूम एक्सचेंज रेट हैज गॉन टू 65. इसको मैं ग्रीन में कर देता हूं, 2020 का ग्रीन है. नाउ अब दिस वुड बी व्हाट, $100 into 7,500. 65 Mhm. taken Plus 65. 1,000. Correct. So this comes out to 7,500 rupees. Now somebody looking at this number, अब क्योंकि P&L में तो सिर्फ ये ब्रेकअप जाता है ना, टोटल सेल्स ब्रेकअप नहीं होता, ऐसा होता है. और somebody will see, कंपनी तो ग्रोथ की जगह नीचे चली गई है, बट टेक्निकली कंपनी ने ग्रो करा है, नीचे गया, कांस्टेंट रहा है. इसको फॉरेक्स इम्पैक्ट बोलते हैं. यानी कंपनी ये जो ग्रोथ या डी ग्रोथ, इन दी एग्जांपल में डी ग्रोथ, लेट्स अज्यूम अगर मैं यही सिनेरियो 2, लेट्स अज्यूम एक्सचेंज रेट 80 का ले लेता, अगर 80 हो जाता तो यहाँ पे 100 into 80 हो जाता, एंड कंपनी का टोटल सेल्स वुड बी 9,000 रुपीज, 8,000 plus 1,000. And somebody looking at these, sorry, yeah, somebody looking at this 8,000 से 9,000, somebody will say, oh, company has grown from 8,000 sales to 9,000 sales, but technically company को sales कोई grow ही नहीं करा है. It's a foreign exchange rate which has moved in your favor or moved against you, which creates this impact, which is called as forex impact. तो ये स्लाइड पे
बताया गया है। हाँ जी, सो आई विल पॉज हियर। आप लोग देख लीजिए इसको अच्छे से, नोट करें, नोट कर लीजिए, कुछ पूछना है तो पूछिए। हेलो क्या आशीष? सर, फॉरेक्स को गोल्ड से भी वो हेज कर सकते, मतलब कर सकते हैं ना, एक्सचेंज? कर सकते हैं गोल्ड से? गोल्ड से, मतलब अलग अलग तरीके होते हैं हेजिंग करने के, तो गोल्ड से भी कर सकते हैं। विल नॉट गेट इनटू द हेजिंग प्लीज, दैट्स नॉट द in the scope of this, but yes, gold से भी कर सकते हैं, और there are other forms of hedging those risk. Any other doubt in this forex impact? No, Nishan. Okay, the example that I've given you is called as transaction exposure. In this slide, there are three categories of the exposure. The example that I've given you is this transaction exposure, which means जो gain and loss होता है on account of change in exchange rate because of आपकी invoice date अलग होती है और पैसा आने का date अलग होता है. Next is translation exposure. Translation exposure क्या होता है? Company A is a parent company based in India. Company B is a subsidiary of A and based in US. So A की जो balance sheet होगी, that will be in INR, and B's balance sheet will be in USD. Any doubt to this? No, sir. But आपने कंसोलिडेशन में किया होगा, जो सेशंस हुए थे आपके पहले के पीएच के साथ, कि अगर एक सब्सिडरी कंपनी होती है, उसकी बैलेंस शीट आके कंसोलिडेट होती है पेरेंट कंपनी में, उसी को कंसोलिडेशन बोलते हैं. आपने देखा होगा कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट. तो व्हाट डू यू मीन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट? कि जो सब्सिडरीज होते हैं उनकी भी पीएनएल एंड बैलेंस शीट को आप पेरेंट कंपनी में ऐड कर देते हैं. ठीक है. Now
लेट्स अज्यूम बी की जो बी का जो एसेट है उसकी टोटल वैल्यू $100 है। लेट्स अज्यूम इन 2019 और 2020 में भी लेट्स अज्यूम वो $100 है। सेम लॉजिक ना 2019 में अगर एक्सचेंज रेट $60 है तो ये एसेट कन्वर्ट होके सिर्फ 6000 INR बनेगा, और 2020 में अगर ये एक्सचेंज रेट 80 हो जाता है तो ये 8000 बन जाएगा। Now if you see carefully, there is value of the asset of the company B, it still remains same। 2019 में भी $100 था, 2020 में भी $100 है, बट बिकॉज हम ये कन्वर्ट करते हैं, इसको ट्रांसलेट बोलते हैं, हमें आईएनआर में ट्रांसलेट करना होता है और उसके बाद कंपनी की ए की बैलेंस शीट में हम ऐड कर पाएंगे। इसको ट्रांसलेशन एक्सपोजर बोलते हैं। देख लीजिए पहले एक्सेल में बिफोर आई टेक यू टू द स्लाइड। कोई डाउट है यहाँ तक तो पूछिए। So what was the exposure over here? Sorry, exposure? Which exposure? Exposure for the subsidiary. This is exposure for the parent, because parent की कंपनी में either 6000 will be added or 8000 will be added. That is a risk for the parent, not for the subsidiary. कि सब्सिडी की बैलेंस शीट में तो फ्लैट $100 है ना, कोई चेंज नहीं आएगा उसमें। इट्स अ रिस्क फॉर द पेरेंट। Sorry, but can you please explain how is it the risk? सो आप एक पेरेंट कंपनी हो और आपकी सब्सिडरी यूएस में है, you will prefer higher value to be added to your balance sheet or lower value of the asset to be added to your balance sheet? Yes. So now if the exchange rate on the next year moves to 40, तो आपके बैलेंस शीट में 4000 ऐड होगा इंस्टेड ऑफ 6000। दैट इज अ रिस्क, करेक्ट? Yes. This is the risk for the parent, not for the subsidiary. बिकॉज सब्सिडरी की बैलेंस शीट में कोई भी चेंज नहीं आएगा एक्सचेंज रेट चेंज होने की वजह से, उसके में तो $100 फिक्स है। जो चेंज आएगा वो पेरेंट की बैलेंस शीट में आएगा एट द टाइम ऑफ कंसोलिडेशन। Akansha, is that clear? Any question? But sir, in the risk, this amount of 60 is riskier or amount 40? No, we're not comparing the risky vis-a-vis 60 or vis-a-vis 40. The risk is अगर पिछले साल 60 था तो अगले साल रिस्क इसकी उससे कम ना हो जाए। दैट इज द रिस्क। Okay. Any other question before I move to slides? Okay, this is called as translation exposure. पढ़ लीजिए, सेकंड वाला पढ़ लीजिए आप लोग। Translation exposure. Read this. Let me know if doubt है।
Anji, is that clear? Any doubt in translation exposure? So we've discussed transaction and we've discussed translation. Okay. Next is the economic exposure. Now, what do you mean economic exposure? Let's again take an example. So, mm, 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 mm. Yeah. So let's assume again company A. Company A purchase oil from, let's assume, ONGC. Okay. Company A purchase oil from ONGC. So company A be Indian company hai, and ONGC is also Indian company. So this is not export import. This is just a domestic purchase. Okay. So क्या होता है transaction A pays INR to ONGC and ONGC gives oil. This is the transaction, correct? Now, ONGC, the price at which ONGC will sell oil to A, will this be dependent on international oil price? Yes or no? आपको क्या लगता है? ONGC, ONGC ऑयल कहाँ से लाएगा? ONGC जो ऑयल इंटरनेशनल मार्केट से खरीदता है और फिर ए को देता है. सो इंटरनेशनल मार्केट में जब प्राइस ऊपर नीचे होगा उसका इम्पैक्ट ए को आएगा, हाँ या ना? Guys, will this impact A or not? Yes. Yes. In spite of the fact that A is not paying anything in dollars, A is paying everything in INR only, which is his domestic currency, but फिर भी वो indirectly एक्सचेंज रेट से इम्पैक्ट होगा, बिकॉज अगर इंटरनेशनली डॉलर का ऑयल का प्राइस ऊपर नीचे होता है और एक्सचेंज रेट का प्राइस ऊपर नीचे होता है तो ONGC जिस प्राइस पे ए को देगा वो भी इम्पैक्ट आ जाएगा. एंड दीज आर कॉल्ड एज इकोनॉमिक एक्सपोजर, जो इनडायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं, डायरेक्टली इम्पैक्ट नहीं करते. अनदर एग्जांपल इज, जैसे हम अपने कार्स में पेट्रोल भरवाते हैं, सो अगर डॉलर और आईना का प्राइस बहुत ऊपर नीचे होगा तो इंडिया में पेट्रोल के प्राइस भी चेंज हो जाते हैं. तो वो हम इकोनॉमिक एक्सपोजर है, हमें डायरेक्टली इम्पैक्ट नहीं पड़ता बट इनडायरेक्टली हमें भी इम्पैक्ट पड़ता है. एंड दिस इज योर थर्ड कैटेगरी इस स्लाइड में, इकोनॉमिक एक्सपोजर. अगेन आई विल गिव यू 2 minutes, रीड दिस एंड लेट मी नो if डाउट है. Any doubt?
सर एक बार ये इकोनॉमिक एक्सपोजर वापस रिपीट करो. सो इकोनॉमिक एक्सपोजर इज जो आपको एक्सचेंज रेट का जो इम्पैक्ट है वो इनडायरेक्टली पड़ता है. इन दिस एग्जांपल A is purchasing oil from ONGC. So A is not importing or exporting anything. But because exchange rate movement will impact ONGC and ONGC will pass on that impact to A, that indirect impact is called as economic exposure. ये एग्जाम्पल मैंने जो एक्सेल में लिखा था ये देखिए. इस एग्जाम्पल में we understood this example or should I repeat this again? Oh, understood. Okay. Anybody else? Any other doubts? We've done 3 types: economic exposure, translation exposure, and transaction exposure. Sir, Yeah. what would be the difference in the transaction and the economic exposure? Both are related to forex exchange, isn't it? All 3 are related to foreign exchange. Translation, transaction, and economic. All 3 are related to foreign exchange. The difference, Akansha, is that transaction exposure will happen at each export and import transaction. It will impact at individual transaction level. Translation will happen when you translate the entire value of the balance sheet for a consolidation purpose. An economic exposure will happen that will not have a direct impact, will have an indirect impact. ये तीनों में difference है. वो difference slides में नहीं है, तो अगर आपको note करना है तो आप कर लो. So indirect impact वो उसमें exchange rate उसके में भी तो है export and import में. Economic exposure में भी वही हो रहा है. Sorry, getting a bit confused. A ने क्या एक्सपोर्ट, जो एग्जांपल अभी स्लाइड पे सॉरी एग्जांपल जो एक्सेल पे स्क्रीन पे है इस वक्त, is A doing any export and import? It's selling oil. Is A doing any export import? Oh, no. Is A paying or receiving any foreign currency? No, no. Still A is getting impacted by exchange rate? No, I think only ONGC will be impacted then. No, that is wrong understanding. ONGC will get impacted. जो ONGC को impact होगा उसको transaction exposure बोलते हैं. बट ONGC वो इम्पैक्ट अपने पास नहीं रखेगा, वो इम्पैक्ट ए को पास ऑन कर देता है, तो ए के लिए वो इकोनॉमिक एक्सपोजर बन जाता है. One more doubt. Yeah. तो ए के पास जब वो जा रहा है एक्सपोजर, तो उसमें तो इम्पैक्ट पड़ रहा है ना इंटरनेशनल प्राइस का. बट इनडायरेक्टली पड़ रहा है ना, इसलिए तो उसको इकोनॉमिक एक्सपोजर बोल रहे हैं. जो इनडायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है उसको इकोनॉमिक एक्सपोजर बोलते हैं. Okay, thank you. Let me give another example. This is not a very good example to in a current environment, but just if you guys allow me to take that. So for example, there's a pandemic and COVID. Now, somebody who loses his or her job because of this, उसको direct impact है. Now let's assume अगर कोई डायरेक्ट जॉब लूज नहीं कर रहा है, बट पूरी इकोनॉमी स्लो डाउन हो गई है, उस इकोनॉमी स्लो डाउन की वजह से आपकी सैलरी के जो आपके एंड ऑफ द ईयर आपके अप्रेजल होते थे, जो इंक्रीमेंट होते थे, बोनस होते थे, वो इम्पैक्ट हो गए, तो वो इकोनॉमिक एक्सपोजर आपको इनडायरेक्टली इम्पैक्ट कर रहा है. इम्पैक्ट तो कर रहा है बट इनडायरेक्टली इम्पैक्ट घूम के कर रहा है. दैट इज कॉल्ड एज इकोनॉमिक एक्सपोजर. और जो आपको जो डायरेक्ट इम्पैक्ट करता है उसको ट्रांजैक्शन एक्सपोजर बोलते हैं. आकांक्षा, इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir.
Okay. Anybody else any other doubt in these three transaction, translation and economic? ये important है. ये इंटरव्यूज में बहुत पूछा जाता है, फोरकास्टिंग के जो इंटरव्यूज होते हैं. लास्ट टाइम कुछ क्वेश्चन है? ठीक है, No, sir. ठीक है. In case no, so we'll move to the next, which is modeling of EPS and DPS. Now, what is EPS? EPS is earning per share. And what is DPS? Is dividend per share. ठीक है. Now, EPS क्या होता है? EPS is equal to PAT minus preference dividend. आप नोट कर लो फॉर्मूला, आपको नोट करना है तो divided by number of outstanding equity shares. ठीक है, ये फॉर्मूला होता है ईपीएस का. So if the company has an EPS of 10 rupees, what does this mean? Company has earned 10 rupees per share. And if the DPS is 6 rupees, this means out of this 10, company has declared to pay 6 to shareholders, and hence जो remaining 4 है वो retain earning बन जाता है. देख लीजिए आप लोग, यहाँ तक कोई डाउट है तो. EPS is कितना कमाया. जरूरी नहीं है जो कमाया वो सारा शेयर होल्डर को दे दे. जो शेयर होल्डर को देते हैं उसको डीपीएस बोलते हैं, और जो रिटेन कर लेता है उसको रिटेन अर्निंग बोलते हैं. गाइस कोई डाउट यहाँ तक? No. तो ईपीएस मैंने आपको बता दिया क्या होता है. ईपीएस का फॉर्मूला आपको नंबर ऑफ शेयर्स पर डिपेंड करता है. तो ईपीएस की फोरकास्टिंग सिंपल कैसे होती है. हम नेक्स्ट ईयर का पैट फोरकास्ट करना सीख चुके हैं पीएनएल से. नेक्स्ट ईयर का पीएनएल फोरकास्ट हो गया. प्रेफरेंस डिविडेंड फिक्स्ड होता है, मान लीजिए 0 है अभी के लिए. तो नेक्स्ट ईयर कंपनी का प्रॉफिट फोरकास्ट हो गया. कंपनी के नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स जनरली कांस्टेंट रहते हैं, तो नेक्स्ट ईयर का प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स विल गिव यू ईपीएस. हम करेंगे जब हम फोरकास्टिंग करेंगे, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव यू एग्जांपल कैसे होता है. एनी क्वेश्चन ऑन दिस? तो टेक्निकली ईपीएस फोरकास्टिंग में आपको नेक्स्ट ईयर आपको नए आइटम फोरकास्ट नहीं करे, आपको जो प्रॉफिट फोरकास्ट किया है उसी से हमारा ये आ जाएगा. चलिए, ये आपको फॉर्मूला मैंने बता दिया ईपीएस का. ठीक है, एक एग्जांपल करते हैं वेटेड एवरेज. नाउ अभी क्या होता है कि जो नंबर ऑफ शेयर्स होते हैं अगर ड्यूरिंग द ईयर कांस्टेंट नहीं है, ऊपर नीचे थोड़ा बहुत अगर चेंज होते हैं, तो आप कैसे डिनोमिनेटर कैलकुलेट करोगे. देन डिनोमिनेटर जो है कांस्टेंट नंबर नहीं होता है, वो वेटेड एवरेज के बेसिस पे हम कैलकुलेट करते हैं. और वो कैसे करते हैं, लेट्स
understand through this illustration. Now, so एक क्वेश्चन समझ लेते हैं पहले. 1 अप्रैल 14 को आपके आउटस्टैंडिंग शेयर्स 100 थे, कंपनी ने कोई बायबैक नहीं किया, तो उस क्वार्टर के एंड में भी 100 शेयर आउटस्टैंडिंग है. प्लीज कोई डाउट और क्वेश्चन हो तो पूछ लेना मुझसे. 1 जुलाई को कंपनी के फिर से 100 थे, बट ड्यूरिंग द क्वार्टर कंपनी ने 20 रुपीज का बायबैक, सो 20 शेयर्स का इशुएंस किया. जो ब्रैकेट में है वो बायबैक होगा, जो विदाउट ब्रैकेट है वो इशू होगा. यानी कंपनी ने 20 रुपीज के और शेयर इशू करे, टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर 120 हो गए. ठीक है. फिर 1 जैन को स्टार्टिंग 120 थे, कंपनी ने 10 रुपए का बायबैक किया, ब्रैकेट में जो है वो बायबैक, तो 120 माइनस 10, अब कितने आउटस्टैंडिंग हो गए? 110. 31 मार्च को कंपनी के फिर से 110 थे, कंपनी ने कोई इशू और बायबैक नहीं किया, 0, एंड एट द एंड ऑफ द क्वार्टर 110. ये इंफॉर्मेशन आपको गिवन है. आपका you need to use this information to compute the weighted average outstanding shares. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. किसी को डाउट है क्वेश्चन में before we go to the calculation? No, sir. Now, so जो फर्स्ट 100 शेयर्स है वो कितने महीने के लिए 100 शेयर्स रहे? अप्रैल, मई, जून, क्योंकि नेक्स्ट जुलाई का तो मुझे डेटा दे रखा है. सो 100 शेयर्स 3 मंथ्स तक रहे, और 3 मंथ एक साल में 12 मंथ्स होते हैं, तो इसलिए 100 इंटू 3/12 कर दिया मैंने. ये इसका कैलकुलेशन है 1 अप्रैल वाले का. एनी डाउट ऑन फर्स्ट 100 इंटू 3/12 में? किसी को डाउट? 3 represents 3 months and 12 represents number of months in a year. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज 1 जुलाई को 100 शेयर्स थे और कंपनी ने 20 रुपीज का इशुएंस करा, 20 शेयर्स का इशुएंस करा, 120 हो गए. तो 120 कब तक रहे? अगला 1 जैन है, तो यानी नेक्स्ट 6 मंथ्स तक 120 रहे, इसलिए 120 इंटू 6/12 हुआ. कोई डाउट? No, sir. तो 100 नहीं होगा, 100 into 6/12. 100 क्यों होगा? 120 हो गया ना. 100 तो 1 जुलाई तक 100 थे, 1 जुलाई को उसने 20 और इशू कर दी ना, तो 1 जुलाई से तो 120 हो गए ना. Okay. From 1st July, not from 1st Jan. नहीं, 1 जैन तक 120 थे, 1 जैन को फिर 110 हो गए. No, I was calculating from to 1st July 2014. 1 जैन 2014 का है, 1 अप्रैल 2014 से तो स्टार्ट हो रहा है क्वेश्चन. आउटस्टैंडिंग तो पहले से थे ना. हमें नहीं पता पहले से, हम 1 अप्रैल से कैलकुलेट कर रहे हैं बस. 1 अप्रैल 14 से, 1 अप्रैल 14 से पहले का हमें नहीं पता क्या सिचुएशन है. सो दिस क्वेश्चन रिक्वायर्स 1st अप्रैल वाले में फिर हमने 3 months क्यों लिए? क्योंकि 1 अप्रैल से 1 जुलाई तक 3 मंथ्स ही हुए ना. ओके ठीक है, थैंक यू. सिमिलरली 1 जुलाई से 1 जुलाई 14 से 1 जैन 15 तक 6 मंथ हुए, इसलिए मैंने नेक्स्ट मंथ 6 मंथ्स लिए. ओके, इज इट क्लियर? यस. Okay. अब नेक्स्ट फिर कंपनी ने 1 जैन को 10 शेयर्स का बायबैक कर लिया, तो 110 हो गया. तो 1 जैन से लेकर 31 मार्च तक अगेन 3 मंथ्स, तो ये 1/110 इंटू 3/12 होना चाहिए. ये 12 है, ठीक है, डिनोमिनेटर में ठीक कर लो, टाइप हुआ है ये. सो 110 इंटू 3/12 होना चाहिए. ये 110 है. कोई डाउट यहाँ तक?
अब आगे चलते हैं। अब 31 मार्च उसकी तो जरूरत ही नहीं है, बिकॉज जो ईयर है वो तो खत्म हो गया। 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का ही हमें देखना था, 1 ईयर का, और वो कंप्लीट हो गया। अब जो 31 मार्च से आगे वाला जो लास्ट लाइन है, ये लास्ट लाइन है, ये तो नेक्स्ट ईयर की कंपटीशन में आएगी, करेक्ट। इसलिए जो लास्ट 110 है वो नहीं लिया है मैंने। तो इज दैट जनवरी क्लियर? करेंगे। जनवरी को लिया ना हमने 3/12, 110 इंटू 3/12। 31 मार्च वाली नहीं लेंगे, बाकी फर्स्ट 3 लेंगे, लास्ट नहीं लेंगे। Is that clear? Any doubt, question? Anji, is that clear? Any question in this? This is an important calculation because we will need this in when we move to forecasting calculations. So that's why I've taken my illustration to give you a sense in terms of how we compute this. Last time, any questions on this slide? No, sir. Okay. Okay. So that's my EPS. Now coming to dividends, so dividend भी दो तरह के होते हैं, एक होता है diluted EPS, sorry, एक होता है diluted EPS, एक होता है basic EPS. So there are two types of EPS. One is basic EPS, पहले basic सीखते हैं। जो भी हमने किया वो basic EPS था, ये वाला जो है, ये वाला basic EPS जो भी हमने किया। The next is diluted EPS. Diluted EPS क्या होता है? कंपनी ना, let's assume कंपनी ने 1 January 19 को convertible debentures issue करे. I will explain what is convertible debentures. Convertible debenture issue किए and 100 debentures, ठीक है, और कंपनी के इक्विटी शेयर्स हैं 200, ठीक है, और ये कन्वर्टेबल डिबेंचर जो इशू करे इसका कन्वर्जन होगा, will happen in 2021. What does this mean? This means these debentures will be converted
into equity shares in 2021. यहाँ तक देखिए कोई डाउट है तो जो मैंने रेड टेक्स्ट में रेड फॉन्ट में, एनी डाउट इन दिस? Any doubt in this red part? Okay, so now when I will calculate basic EPS, when I will calculate basic, when I will calculate basic EPS in 2019, मैं number of shares कितने लूंगा? My number of shares, हाँ जी कितने लूंगा? Number of shares will be 200. ये होता है बेसिक ईपीएस जब आप डिनोमिनेटर में 200 लोगे. जब 2019 में ही मैं डाइल्यूटेड ईपीएस लूंगा, उसके लिए जो नंबर ऑफ शेयर्स होंगे, अभी जो डिबेंचर्स है, डिबेंचर्स का कन्वर्जन जो रेशियो है, लेट्स अज्यूम 2:1 है. व्हाट डू वी 2:1? कि 2 डिबेंचर इसके पास है, उसको 1 शेयर मिलेगा. यानी कितने डिबेंचर्स हैं? 100 डिबेंचर्स हैं तो 50 शेयर इशू हो जाएंगे. तो मैं 250 लूंगा यहाँ पे. ये डिफरेंस होता है डाइल्यूटेड और बेसिक ईपीएस में. डाइल्यूटेड ईपीएस में जो फ्यूचर में कन्वर्जेंस होने वाले, फ्यूचर में होने वाली, अभी हुई नहीं है, फ्यूचर में होने वाले, उनको भी मान लेते हैं हो गई और उसके अकॉर्डिंगली कैलकुलेट किया जाता है नंबर ऑफ शेयर. देखिए कोई डाउट होते हैं यहाँ तक? हाँ जी, कोई डाउट यहाँ तक? Is that basic EPS and डाइल्यूटेड EPS clear to everyone? Yes. Definition में देख लीजिए. Companies issue certain financial instruments that are not equity shares but will be converted into shares in the future. जब आप इन कन्वर्जन्स को भी कंसिडर करते हैं, so those are called as diluted EPS. So ये मैंने आपको स्टेप्स बता दिए कैलकुलेट करने के. सेम क्वेश्चन जो अभी हमने किया, कुछ एग्जांपल्स है अगर आपको और ट्राई करने हो, अदरवाइज सेम एग्जांपल जो मैंने आपको कराया. डिविडेंड यू डिस्कस. व्हाट इज डिविडेंड? हाँ, डिविडेंड पॉलिसीज. व्हाट इज डिविडेंड पॉलिसी? कि कंपनी, जैसे मैंने आपको जो एग्जांपल यहाँ पे दिया था, सो इफ यू गो बैक, या
जैसे ये वाला एग्जाम्पल मैंने आपको दिया, इसमें कंपनी का 10 रुपीज ईपीएस है, बट कंपनी ने डिविडेंड दिया 6 रुपीज का। क्यों 6 रुपीज दिया, कैसे 6 रुपीज दिया, उसको डिविडेंड पॉलिसी बोलते हैं। इसमें दो पैटर्न्स होते हैं, दो पैरामीटर्स होते हैं। वन इज इन्वेस्टर एक्सपेक्टेशन, जो शेयर होल्डर होते हैं वो कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, और एक होता है मार्केट ट्रेंड। फॉर एग्जाम्पल जैसे पेंडेमिक चल रहा है, सो कोई भी कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करेगी, बिकॉज एवरी कंपनी इज गोइंग थ्रू रफ पैच, दे नीड टू सर्वाइव, ठीक है, टू बाउंस बैक into their production cycle and stuff like this. So अब जैसे जो मार्केट ट्रेंड है वो ये है कि कंपनीज डिविडेंड नहीं दे रही. So if you as a company also do not pay dividend, that is okay because the market trend is like this. Let's assume if the pandemic नहीं होता and India is going through a very significant growth phase and most of the companies in your industries is giving dividend and you don't pay dividend, then shareholders will have problem because market trend is that everybody is giving a dividend, you are not paying dividend. So this is the way the company or the management or the board of the company decides कि कितना देना है, और अगर देना है तो you look at these parameters कि इन्वेस्टर्स की एक्सपेक्टेशन क्या है और मार्केट में ट्रेंड क्या चल रहा है. मार्केट ट्रेंड मतलब जो इंडस्ट्री है, जो पीयर्स है, जो उसकी कॉम्पिटिटिंग कंपनीज हैं, उन्होंने कितना डिविडेंड डिक्लेयर किया है या नहीं किया. एनी क्वेश्चंस? ठीक है. सो दिस इज द वे द कंपनी कैलकुलेट्स डिविडेंड, कितना डिविडेंड पे करना है कि नहीं करना. Any questions on dividend, EPS, diluted EPS before I move to the next working capital? Okay. I take. हेलो. Yeah, Ashish. सर डायल्यूटेड ईपीएस सर 2019 में ही क्यों लिया सर? वो एग्जाम्पल लिया था, वो तो किसी भी ईयर में कैलकुलेट कर सकते हैं. एग्जाम्पल लिया था. अच्छा. ठीक है. Moving to working capital. So we've discussed this earlier also. What is working capital? Working capital is current asset minus current liability. And what is current asset? Your assets जिसका life up to 1 year होता है, and current liabilities are those liability which you need to pay in less than 1 year. And current asset minus current liability is your working capital. What do you working capital? A capital which you need to run your day-to-day business or to manage your working of the business. ठीक है. ये आपकी वर्किंग कैपिटल का साइकिल है. ठीक है. सो फॉर एग्जांपल rather than doing this complicated way, हम बहुत सिंपल तरीके से करते हैं. वर्किंग कैपिटल क्या होता है? करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी. ये आपकी वर्किंग कैपिटल है. करेक्ट. So any change in the current asset or any change in the current liability would result in a change in the working capital. You with me on this? Yes, sir. Yes, yes. Working capital is a component of two variables, current asset, current liability. इन दो वेरिएबल्स में कोई भी चेंज आएगा तो वर्किंग कैपिटल में इंपैक्ट आएगा. वही इस स्लाइड में इतना घुमा फिरा के एक्सप्लेन कर रखा है, which I don't think is too relevant. आप सिंपल से समझो, आपके कोई भी करंट एसेट और कोई भी करंट लायबिलिटी में प्लस और माइनस कोई भी इंपैक्ट आएगा तो उसका इंपैक्ट आपको वर्किंग कैपिटल में आएगा ही है. करंट एसेट्स के एग्जांपल क्या होते हैं? डेटर्स. करंट लायबिलिटी के एग्जांपल्स क्या होते हैं? क्रेडिटर्स. ये से रेशियोज आप करके आए हैं, रेशियोज की जो सेशंस पे थे केपीएमजी के आपके. डेटर्स, टर्नओवर, कलेक्शंस, तो ये मैं दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है. ये भी सब रेशियोज आप करके आए, ठीक है. बैलेंस शीट आइटम्स. बैलेंस शीट का एक बार पैटर्न, ये आपका करंट लायबिलिटी सेक्शन होता है. सो लेफ्ट साइड पे आपकी लायबिलिटीज है, राइट साइड पे एसेट्स है. सो ये आपका करंट
लाइबिलिटीज है और ये आपका नॉन करंट लाइबिलिटीज है. लॉन्ग टर्म लोन्स, शॉर्ट टर्म लोन्स, and then you have equity. Similarly, on the asset side, you have current assets and then you have fixed asset. And in liability का total और assets का total match होना चाहिए. हम बनाएंगे बैलेंस शीट फोरकास्टिंग में. Just I'm just giving in just a sample, but we'll prepare full-fledged balance sheet. Don't worry. ठीक है. इन्वेस्टमेंट्स दो तरीके हो सकती है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स. सो नथिंग न्यू. शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कम इनटू करंट एसेट, लॉन्ग टर्म विल कम इनटू फिक्स्ड एसेट. बैलेंस शीट में और क्या क्या आइटम्स होती है? कैश वी नो, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म वी डिस्कस. इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स आज हमने डिस्कस किया. इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स, हाँ. पेंशन ऑब्लिगेशन डिस्कस करते हैं, ये हमने नहीं किया है. व्हाट इज पेंशन ऑब्लिगेशन? सो जनरली गवर्नमेंट कंपनीज में ही होता है कि जो एम्प्लॉयज होते हैं जब वो रिटायर हो जाते हैं तो गवर्नमेंट कंपनीज अपनी एम्प्लॉयज को पेंशन्स पे करती हैं. वो पेंशन्स उस कंपनी की लायबिलिटी में आती है, बिकॉज वो लायबिलिटी है. जब तक वो एम्प्लॉय, इवन इफ द एम्प्लॉय इज नॉट वर्किंग विद द ऑर्गेनाइजेशन, स्टिल द कंपनी हैज द लायबिलिटी टू पे द पेंशन्स till the person survives. So that is called as pension, and hence उस कंपनी की बैलेंस शीट में लायबिलिटी में आता है. ठीक है. ठीक है. सो जो कंपनीज पे कर देंगी उसमें आता है. अगर कोई कंपनी से, प्राइवेट कंपनीज है वो पे नहीं करती, या कुछ गवर्नमेंट कंपनी ने चेंज कर दिया वो सेगमेंट, सो अगर नहीं है तो नहीं आएगा, अगर है तो आएगा. ठीक है. इक्विटी, इक्विटी कैसे कैलकुलेट होता है? ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस मतलब प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग बैलेंस प्लस इस साल का प्रॉफिट माइनस जो डिविडेंड पे कर दिए. ठीक है. सो फर्स्ट थ्री में कोई डाउट? ओपनिंग बैलेंस प्लस इस साल का प्रॉफिट माइनस डिविडेंड प्लस न्यू शेयर्स इश्यूड माइनस बायबैक. I repeat, opening balance plus profit minus dividend paid plus new shares issue minus buyback. That is the simplest way that you should understand the calculation for equity. Any question? चलिए. Cash flow. Let me zoom this. Again, cash flow statement आप कर आए हैं जो आपके सेशन में थे, बट मैं बनवाऊँ आपको फुल फ्लेज मॉडलिंग का कैश फ्लो, बट जस्ट आई विल शो यू अ पैटर्न. सो दैट आई जस्ट मेंशन आई थिंक इन द अर्ली पार्ट ऑफ द सेशन की कैश फ्लो में तीन कैटेगरीज होती हैं: ऑपरेटिंग कैश फ्लो, इन्वेस्टिंग कैश फ्लो एंड फाइनेंसिंग कैश फ्लो. सो कैश फ्लो क्या करता है? आपके जितने भी कैश आइटम्स होते हैं, इनफ्लो या आउटफ्लो. इनफ्लो मीन्स कैश कमिंग इनटू द बिजनेस, कैश आउटफ्लो मीन्स कैश गोइंग आउटसाइड द बिजनेस. तो जितना भी पैसा आ रहा होता है या जा रहा होता है उसको तीन कैटेगरी में डिवाइड कर देता है. ऑपरेटिंग जो आपके कोर ऑपरेशंस होते हैं, इन्वेस्टमेंट्स जो आपके इन्वेस्टमेंट्स के पार्ट होते हैं, और फाइनेंसिंग जो आपके फंडिंग साइड से आते हैं. ठीक है. तो ये तीन कैटेगरी में स्प्लिट कर देता है. इसको कैसे बनाते हैं ये आप लोगों ने किया है, बट मॉडलिंग में कैसे बनाते हैं, कैसे फोरकास्ट करते हैं, ये मैं आपको कराऊंगा. सो प्रोबब्ली आई थिंक नेक्स्ट क्लास में हमारा ये स्टार्ट हो जाएगा. सो उसमें आपको एक फोरकास्टिंग पैनल बनाएंगे फुल फ्लैज, हम बैलेंस शीट बनाएंगे फुल फ्लैज, और एक हम कैश फ्लो बनाएंगे. ये सब रिलेवेंट नहीं है मैं इतना. हाँ. सो दिस wraps up this module for you. Any questions before I go to the जो आकांक्षा पूछ रही थी कि कंपनी सिलेक्ट करनी है, and in terms of what's the plan next? Any questions from this module जो हमने complete किया है? Just to summarize, हमने क्या किया? हमने just अभी तक फोरकास्टिंग और मॉडलिंग के रिलेटेड जो सम बिल्डिंग ब्लॉक्स के कॉन्सेप्ट्स हैं, जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं, फॉर्मूलाज हैं,
हमने उनको समझा है, और नेक्स्ट क्लास से हम उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन स्टार्ट करेंगे. विल स्टार्ट क्रिएटिंग मॉडल. मैं बताऊंगा क्या प्लान है नेक्स्ट क्लास का. विल कम टू दैट. बट बिफोर आई गो टू दैट, कुछ क्वेश्चंस डाउट्स हैं, कुछ पूछना है? Guys, asked you many questions from what we discussed so far. No, sir. ठीक है. So in terms of plan now, before we discuss जो कांचन ने क्वेश्चन पूछा था, अब आप लोग मुझे बताओ, बिकॉज नेक्स्ट क्लास से अब हमारे को मॉडलिंग स्टार्ट करेंगे. क्या करना चाहते हो? यू वांटेड टू डू मोर एडवांस एंड कॉम्प्लिकेटेड, बिकॉज एज आई टोल्ड यू, दो कैटेगरीज के हम कर सकते हैं, ऑप्शंस हैं, उसमें से हम चूज कर सकते हैं. वन इज अ रनिंग कंपनी. सो व्हेन इज अ रनिंग कंपनी मींस आपके पास ऐसी कंपनी जिसके हिस्टोरिकल बैलेंस शीट, पीएनएल सब अवेलेबल है, and the company's balance sheet, P&L, every information is available for last 3 साल 4 साल का, and हम उसको यूज करते हैं और एक नेक्स्ट ईयर का फोरकास्टिंग स्टार्ट करते हैं. दैट इज वन ऑप्शन. इसको मैं रनिंग कंपनी करके हम बोल रहे हैं. अनदर इज जो प्राइवेट इक्विटी, वेंचर कैपिटल की स्टार्टअप फंडिंग होती हैं, उनके मॉडलिंग होते हैं. सो विच मीन्स एक कंपनी जिसका कोई भी पीएनएल, बैलेंस शीट, कैश फ्लो कुछ भी अवेलेबल नहीं है, सब कुछ मुझे खुद बनाना है. ठीक है. और उसकी जो फिर वेंचर कैपिटल या प्राइवेट इक्विटी जो फंडिंग एनालिसिस होता है, सिमुलेशंस होते हैं, वो कर सकते हैं. दिस इज काइंड ऑफ स्टार्टअप मॉडलिंग बोलो आप, इस तरीके से समझ के चलते हैं. तो ये दो कैटेगरीज है. थोड़ा सा इन टर्म्स ऑफ कॉन्टेक्स्ट, जो कॉम्प्लिकेटेड और एडवांस पार्ट है, स्टार्टअप थोड़ा ज्यादा हैवी और कॉम्प्लिकेटेड पड़ता है, बिकॉज आपके पास कोई भी बेस नहीं होता, सब कुछ आपको खुद करना पड़ता है. आपको कोई हिस्टोरिकल एवरेज नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा. एवरीथिंग, हर नंबर आपको खुद कंप्यूट कैलकुलेट करना पड़ेगा. ठीक है, खुद करना पड़ेगा. मतलब अगर हमने वो डिसाइड किया तो हमें खुद करना पड़ेगा, और आपको वो एक्सपोजर ज्यादा मिलेगा, वो सीखने को ज्यादा मिलता है वहां पे. ठीक है. रनिंग कंपनी में बहुत सारा इंफॉर्मेशन हम लास्ट 5 साल का एवरेज, 3 साल का एवरेज करके निकाल लेते हैं. तो वहां पे वो जो चीजें हैं, उतनी कॉम्प्लिकेशंस और एडवांस पीसेस नहीं मिलते, वो थोड़ा रिलेटिवली आसान हो जाता है. ठीक है. So that these are the broad two categories. Now I'm okay with going with either of these. What you as a batch decide. If you as a batch believe कि हमें थोड़ा सा एडवांस करना, and you want to have patience, because थोड़ा सा स्टार्टअप में ज्यादा हैवी होगा, आपको पेशेंस रखने पड़ेंगे. डोंट वरी, समझ आएगा सब कुछ. बट व्हाट आई एम सेइंग, पेशेंस मींस हो सकता है किसी को फर्स्ट टाइम समझ में नहीं आया, किसी को सेकंड टाइम में समझ में आए, तो आप बोल सकते हैं ठीक है कि सर दोबारा रिपीट करो, वो हो जाएगा. बट if the intent is कि नहीं हम, we don't want to be too heavy for ourselves, we don't want to do it, then the running company is an option. So now अब आप लोग बताइए as a batch which option you want me to choose for your batch, so that accordingly मैं फिर आपके लिए केस स्टडी बनाना स्टार्ट करूं जो हमें नेक्स्ट क्लास से यूज कर सके. या एनी थॉट्स, किस कैटेगरी में चूज करना चाहते हैं? So last time आपने बोला था कि let's start with one company which is already there in some of these, I think, listed company, जो हम खुद मतलब अभी listed companies को pick up करके अभी basic थोड़ा start करते हैं, फिर धीरे धीरे later on we'll move with the advanced version. I guess this was the discussion we had earlier. No, मैंने ये नहीं बोला था. मैंने ये बोला था कि हम क्लास में, अगर हम क्लास में, क्योंकि एक मॉडलिंग मैं आपको मैं कराऊंगा और एक आप खुद करोगे, जो मुझसे आप पूछ सकते हो इनपुट, बट मैं आपको एक लाइव मॉडलिंग कराऊंगा. व्हाट डज दैट मीन? आप मेरे साथ क्लास में लाइव करोगे, जो भी सेशंस होंगे उसमें लाइव करते जाओगे. सो मैंने ये बोला था आपको कि दो ऑप्शंस अवेलेबल हैं, एंड इन केस अगर आप चूज करते हो कि आपको मेरे साथ कॉम्प्लिकेटेड वाला करना है,
वो कर सकते हैं. एंड देन आई थिंक समबडी और आई थिंक साहिल या किसी ने कुछ बोला था सर हम दूसरा भी सीख सकते हैं. देन आई सजेस्टेड कि अगर आपको दूसरे में इंटरेस्ट है तो आप वो दूसरा वाला सिलेक्ट करो, उसका स्टार्ट करो, जो डाउट हो मुझसे पूछते जाना, सो दैट यू विल गेट अ विजिबिलिटी ऑफ बोथ. दिस इज व्हाट वी डिस्कस्ड. और वही चीज मैं अभी बोल रहा हूँ, अगर आप स्टार्टअप चूज करते हो तो स्टार्टअप में आपको कराऊंगा, बिकॉज वो देखो अगर आपने स्टार्टअप सीख लिया तो रनिंग कंपनी इज नॉट अ प्रॉब्लम, बिकॉज रनिंग कंपनी इज अ सबसेट ऑफ द स्टार्टअप. ऐसा कोई भी वेरिएबल नहीं है जो स्टार्टअप में सीख लोगे रनिंग कंपनी में आप नहीं कर पाओगे. बट वाइस वर्सा ट्रू नहीं है, क्योंकि रनिंग कंपनी करने के बाद ऐसी बहुत सारे आइटम्स और बहुत सारी कैलकुलेशंस होगी जो आप नहीं सीख पाओगे, जो आपको स्टार्टअप की यूनिक होती है. Sir, Sir, we'll go I with guess startup we should go. then. Yeah, we Yeah, should go sure. for startup then. Yeah. So before you take those decisions, I'm just putting it very honestly and being transparent you to everyone is कि वो जो second वाला आप category है which is startup या वो थोड़ा heavy रहेगा, बहुत कुछ extra सीखने को मिलेगा no doubt, but the only cooperation and support I would need is you need to have patience in the sense because वो काफी ज्यादा mathematical and Excel oriented होगा. तो अगर आपको एक बारी में समझ नहीं तो don't press the panic button. It is possible आप कुछ नहीं समझ आए सबको एक बारी में, and then probably you go back and revise and the next class में दोबारा रिवाइज करूं तब समझ में, and कुछ लोगों हो सकता है थर्ड टाइम में समझ आए. So that's the only patience and support I need. You don't need to press a panic button. It's okay. आपको समझ में नहीं आया but बाकी लोगों को समझ आ रहा है. Don't lose the hope. The only support I need from you, you continue to tell me, sir, मेरे को नहीं समझ आया, and that's it. Your job gets over the moment you tell me मुझे नहीं समझ आया, and from there on, I will continue to ensure कि आपको जब तक नहीं समझ आए, I will not leave you alone in that discussion. But if you keep quiet, do not let me know, because आपको लग रहा नहीं यार दूसरों को समझ आएगा तो मैं कैसे बोल सकता हूँ, वो मैं फिर नहीं हेल्प. That is the support that I need from you. कि continue to tell me कि सर मुझे समझ नहीं आया. That's it. It's my lookout. How do I ensure? What example? What pattern I use to ensure you understand this? But unless you understand, you need to voice out and tell me sir मुझे समझ. That's the only support I need, because ये काफी advanced होगा startup वाला. I need that support. अगर आप उसके लिए okay, then I'm okay. If as a batch you want to do that advanced part of it. Okay. As a batch, are you okay in terms of to voice out कि हमें मुझे पता चलना चाहिए कि आपको किस part पे समझ में आ रहा नहीं है, then only I would be able to do that advanced part. Yes, Okay, sir. Yeah. Okay. Okay. So should I take that as an agreement कि we'll do with the advanced startup वाला modeling in the class live? Yes. Sure. Yes. Sure. Yes. Yes, sir. Okay. So that's one part now. So I will start building some case study जिससे हम next class में use कर सकें for the startup part. Now coming to the second part जो आकांक्षा ने starting में पूछा था. Now what you guys can do, आप एक रनिंग कंपनी पैरेलली सेलेक्ट कर लो, लिस्टेड कंपनी, ठीक है, और वो लिस्टेड कंपनी के बारे में पढ़ना शुरू करो. इतना काम है, बट आई वुड सजेस्ट अभी सिर्फ कंपनी को सिलेक्ट करो. व्हाट आई वुड डू, जैसे जैसे मॉडलिंग मैं क्लास में कराऊंगा, जो स्टेप मैं क्लास में कराता जाऊंगा, आप अपने एग्जाम्पल पे वो रेप्लिकेट करना. क्योंकि अभी मैंने नहीं कराया तो अभी आपको बोलूँ ये कर लो वो कर लो, आपको समझ ही नहीं आएगा. बट पहले मैं क्लास में कराऊंगा अपने एग्जाम्पल में जो हम करेंगे क्लास में, फिर आप पैरेलली जिन लोगों को इंटरेस्ट है वो अपने एंड पे उस कंपनी पे रन कर सकते हैं, जो डाउट हो मुझसे पूछ सकते हैं. ठीक है. सो आकांक्षा, कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, अभी के लिए, और ये कोई मैंडेटरी नहीं है, बिकॉज जिनके पास टाइम है और इंटरेस्ट है, बिकॉज ये टाइम लेगा आपको कंपनी सेलेक्ट करना, कंपनी को एनालाइज करना, जैसे मैं क्लास में एनालिसिस कराऊंगा ऐसा आपको करना टाइम लगेगा. मतलब आपको इट विल रिक्वायर सम टाइम एट योर एंड. ठीक है. तो अगर आपके पास है इंटरेस्ट एंड टाइम तो आप वो कर सकते हैं. बट क्लास में तो आपको मैं कराऊंगा तो आपको क्लास में फुल फ्लेज एक सीखने को मिलेगा, उसमें तो कोई डाउट नहीं है. तो जो लोगों का इंटरेस्ट है उनके लिए आप एक लिस्टेड इंडियन लिस्टेड कंपनी उस सेक्टर में या उस डोमेन में जहां पे आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट है. व्हाट आई मीन, फॉर एग्जांपल इफ यू सेलेक्ट सम आईटी कंपनी एंड you don't like reading about the IT concepts, you don't, you feel it dry, you feel the subject to be dry, then don't try and select an IT company, because उस ऐसी इंडस्ट्री ऐसी कंपनी को चूज करना जिसके बारे में आपको थोड़ी नॉलेज हो या आपको
that doesn't sound to be a dry topic to you, because आपको उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा, उस कंपनी के एनुअल रिपोर्ट कुछ सेक्शंस पढ़ने पड़ेंगे जो मैं आपको बताऊंगा. फिर अगर आपको वो थीम ही नहीं अच्छी लगती, then you will find it very very boring and difficult to read about that theme or read about that segment. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूट यही दो पैरामीटर्स है अभी के लिए. इंडियन लिस्टेड कंपनी हो, ट्राई एंड सेलेक्ट द कंपनी जिस सेगमेंट में या जिस इंडस्ट्री में आपको थोड़ा एक्सपोजर हो या आपने कभी काम किया हो या थोड़ा सा आपको इंटरेस्ट हो. तो उसका अगर कभी कुछ किया ही नहीं और किसी का एक्सपोजर नहीं है तो देन यू कैन पिक एंड चूज व्हाटएवर यू आर कंफर्टेबल विद. सो दैट्स द ओनली टास्क एज ऑफ नाउ. वो सिलेक्ट करने के बाद करना क्या है, क्या फर्स्ट स्टेप करना है क्या, वो मैं अभी नहीं बता रहा. वो जैसे जैसे मैं क्लास में बताता जाऊंगा, कराता जाऊंगा, आप पैरेलली रेप्लिकेट करेंगे. इज दैट क्लियर आकांक्षा? अभी नाउ इट डज आंसर योर क्वेश्चन जो आपने पूछा था स्टार्टिंग में, जो मैंने कहा था विल टेक इट टुवर्ड्स द लेटर पार्ट ऑफ दिस सेशन. Yeah, sir. ठीक है. Anybody else, any other question, anything that you want to add in terms of approach? The another important thing that guys you need to understand, and I've been saying this again and again, as a batch, my focus is on ensuring everybody understand and learn. My focus is not कि हाँ अगर 20 स्टूडेंट में से एक स्टूडेंट को या दो स्टूडेंट को समझ आ गया and they want me to change the gears of the class or they want me to change the flow of the class and topic. I'm not pretty much interested in doing that, because what will happen, it will serve their benefits and advantages, but it will be in harm for or probably damaging or dangerous for the other students. Okay, so hence my speed and the tempo is more focusing about the majority rather than driven by one individual student who is not getting it in terms of कैसे करना है क्या करना है. So मैं उस पैटर्न्स पे नहीं कराने की कोशिश कर रहा. ठीक है. So हाँ जी कुछ है. So are we clear with this in terms of जो हम करेंगे, हम उसका रनिंग कंपनी करेंगे. sorry इक्विटी का वेंचर कैपिटल मॉडलिंग स्टार्ट करेंगे probably नेक्स्ट क्लास या नेक्स्ट क्लास डिपेंडिंग ऑन मैं केस स्टडी कितनी जल्दी बना पाता हूँ. एंड जो पैरेलली हम लोग करेंगे, जो आप लोग करोगे और कोई डाउट होगा तो मुझे पूछेंगे, ऑप्शनल है आपके लिए, वो एक रनिंग कंपनी जिसके लिए मैंने भी आपको सिर्फ ये बोला है कि आप एक लिस्टेड कंपनी जिसमें आपको थोड़ा इंटरेस्ट हो या जिस सेगमेंट में आपको समझ आता हो वो सिलेक्ट कर लीजिए. हाँ एक और चीज, नेक्स्ट क्लास से आपको लैपटॉप जरूरत है, तो इनकेस एनीबडी हु इज डायलिंग इनटू दीस सेशंस थ्रू मोबाइल प्लीज, बिकॉज हम बहुत सारे एक्सेल कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे. सो अब जो नेक्स्ट क्लास आप डायलिंग करें, प्लीज कीप योर लैपटॉप्स हैंडी विद यू. ठीक है. या कंसर्न. So could you please help me with some of the listed companies which are there in terms of apparel or something? Because I could only locate either diamond or watches, something like that. In apparel, Raymond's हैं. Yeah, You said apparel, correct? Yeah, clothes and apparel that way. Yes, so Raymond's देख सकते हो आप. It's again an Indian segment. आप Reliance का भी देख सकते हो. Reliance also has segments into that. Then FMCG company भी देख सकते हो, because FMCG companies has certain they don't deal into apparel, they deal into apparel as well. Some of the companies आप वो देख सकते हो. So ये सब companies हैं जो आप देख सकते हो. बाकी कंपनीज अनलिस्टेड सेगमेंट्स में तो आपको उनका डेटा नहीं मिलेगा. एफएमसीजी भी एक अच्छा सेक्टर है, अगर आप लोगों को इंटरेस्ट है, जो लोग सीखना चाहते हैं. एफएमसीजी इज अ गुड सेक्टर टू लर्न. ठीक है. आपको अगर डाउट है तो ऐसा करते हैं, आप आज थोड़ा टाइम स्पेंड करो, आप एक दो तीन कंपनी शॉर्टलिस्ट कर लो, देन आप कल मुझसे पूछ सकते हैं. आई कैन हेल्प यू टू नैरो डाउन दैट लिस्ट for you to finally select that. I can do that also, but the first shortlisting has to be done by you, because थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा कि अगर ये कंपनी सिलेक्ट करती है, कंपनी किस बिजनेस में, is that something that I'm interested in reading, because आपको उस कंपनी की एनुअल रिपोर्ट पढ़नी पड़ेगी, बहुत सारा पढ़ना पड़ेगा, आपको खुद ही गूगल सर्च करना पड़ेगा. तो अगर आपको टॉपिक इंडस्ट्री ड्राई लगती है तो वो फिर आपको थोड़ा डिफिकल्ट होगा एब्जॉर्ब करना. हाँ, तो अगेन पावर सेक्टर, अगर आपको इंटरेस्ट है, आपको पावर सेक्टर में बहुत सारा
टेक्निकल उनके जो जार्गन्स होते हैं वो आएंगे. अगर आप कंफर्टेबल हो, इंटरेस्ट है, तो आप पावर सेक्टर इज ऑल्सो गुड सेक्टर. पावर सेक्टर देख सकते हो, मैन्युफैक्चरिंग का कोई सेगमेंट देख सकते हो, सर्विसेज देख सकते हो. ट्राई एंड अवॉइड बैंक बिकॉज बहुत ज्यादा हेवी हो जाता है फॉर समबडी एट योर लेवल. ठीक है. ट्राई एंड अवॉइड रिफाइनरी बिजनेस. ठीक है. ट्राई एंड अवॉइड टेलीकॉम. इसके अलावा आप स्टार्टिंग में एफएमसीजी, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज, होटल, एजुकेशन, ट्रैवल, इनमें से कोई भी स्टार्ट कर सकते हो फॉर लर्निंग पर्सपेक्टिव. करिए, शॉर्टलिस्ट करिए 2-3 कंपनीज. अगर आप एक कर पाते तो अच्छी बात है. अगर आप स्ट्रगल करते हो 2-3 कर लीजिए कल, देन आई कैन हेल्प यू टू नैरो डाउन द सर्च. दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम. फील फ्री, आपको जो सपोर्ट चाहिए वो मिलेगा. बट आई एम सेइंग प्लीज फील फ्री टू वॉइस आउट एंड प्लीज फील फ्री टू शेयर, इंटरैक्ट रादर देन गेटिंग इनटू द शेल बिकॉज कोई और डोमिनेट करने की कोशिश करे. डोंट ट्राई एंड डू दैट गाइस. प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ रादर देन letting into the and letting others dictate. ठीक है. Any other question, query, doubt? No, sir. चलिए ठीक है. So on that note we will close. कल के लिए प्लीज जो मैंने आपको टास्क बोला है, कंपनी शॉर्टलिस्ट करो. ठीक है. कल लैपटॉप कैरी करो इन केस आई एम एबल टू पुल अप दी case study by tomorrow. So we'll start off tomorrow. If no, probably we'll try and do next weekend. And then let me see how much time does it take for creating a case study on this. ठीक है. चलिए, thanks. We'll connect tomorrow. Bye. Thank you, Nishant. Thank you, sir.